Okay, ji. Assalamu alaikum, everyone. Today we are officially starting off our O levels crash course for May June 2026. So, I can see a lot of people online. Yeah. So, how would I know that you guys are online? So, okay, I'm going to take few names. I'll take few names, and if you can hear me properly, if you can see the screen properly, so if you can write something on the chat, say hi, hello, something like that. ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वालेकुम अस्सलाम मियां मोहम्मद अयान okay, so Dania, Amjad Yar, Aiza Sultan, Rayan, Ammar Ali Ahmed, Azim, Nimra, Zubia, Dania, and Faizan. Guys, can you hear me? Is my voice clear to you? Can you see the screen? So yeah, okay. I would appreciate कि अगर आप मैसेज कर दें एक. Okay, Faizan, I got your message. And yes, waiting for a few more messages. Okay, chale, great. So, what about the rest? Faizan, Aiza, Dania, Nimra, Zubia, and okay. Chale ji, let's. Very good. Right. So let's start off with the course. So basically, you must have seen the tutorial how we would go about it. So let's start off with accounting basics. Okay जी, चले जी. हम ये देखते हैं कि एक बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती, राइट? बट इन अकाउंटिंग, हाउ डज वन बिजनेस कैटेगराइज थिंग्स इन पर्सपेक्ट ऑफ अकाउंटिंग? लाइक एक बिजनेस में अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ डू यू कैटेगराइज अ लॉट ऑफ थिंग्स? हेलो दानिया, आई कैन सी योर मैसेज. ओके, सो बिजनेस क्या करता है कि बिजनेस जनरल कैटेगरीज में, in terms of accounting, they classify the entire business into 5 different categories. And those 5 categories are assets, liabilities, that's capital, this one is income, and this one would be expenses. So all these are also known as accounting heads or heads of accounts. So to clarify this, everything that is there in a business or that relates to a business activity is categorized into 5 broad accounting heads: assets, liabilities, capital, income, and expenses. Right? Okay. So, एक business में जितनी भी चीजें हैं ना, oh, let us not forget anything in a business that has a monetary value or that has a financial value is categorized under these heads. Right? Okay. So everything that there is in business, any categories may categorize होगी. Now, if you would further elaborate assets, there are 2 types of assets. मुझे कोई बता सकता है कौन कौन से assets होते हैं? What are 2 different types of assets? Absolutely right. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. One is non-current asset, and the other category would be current assets. That is how you generally categorize assets in a business. Now, when it comes to liabilities, liabilities are also further categorized into 2 categories. One is a long-term liability, and the other one would be current liability, right? So these are the 2 categories of liabilities alongside the 2 categories of assets within a business. ठीक है जी. अब इसकी डिटेल में जाते हैं. ओके, कोई मुझे बता सकता है कि जी
if you want to define assets, so what are assets? How would you define assets? Is there a definition to it or what? So assets are things owned or controlled by a business providing them benefit. Anything that you own or control which gives you a benefit, that's an asset. ठीक है जी. Okay. Now, within assets, if you have non-current assets, things owned or controlled for more than a year are non-current assets, right? So things that you own and control for more than a year are non-current assets, and the current assets would be things that you own and control for less than a year. Are owned or controlled for less than a year. ठीक है जी. So things owned and controlled for more than a year, non-current assets. Things owned and controlled for less than a year are current assets. Okay, let us just write a few examples of non-current assets, and let us write examples for assets. Okay, so I would appreciate अगर आप में से मुझे कुछ examples मिल जाती हैं. You can always write on chat. Can you give me a few examples of non-current assets? Okay, I'm specifically looking for 6 examples over here. Maybe 5. That depends. Haji. So, Nimra, Saad, Amar, Rayan, Atib, Aiza, Ayan, Zubia, Dania, Habib, Azim. So anyone, if you can like tell me few examples of non-current assets. Okay, great. So first is motor vehicle. सही है जी. और भी बता सकते हैं जनाब. Anyone else? The next one could be land and building, machinery, tools and equipment, and alongside that would be Raji, koi और? I can see somebody writing around chat. Yes, premises, land and building combined together is premises. बिल्कुल सही. Okay, or furniture and fixtures and fittings. Right. So these are assets that are used for more than a year, right? How often do you change these assets at your place? We use them generally for more than a year. Acha ji. Now, coming on to current assets. Assets that are being used or controlled for less than a year. सबसे पहले इसमें आता है closing inventory. Now, let's just discuss this further. Okay, this is a very important thing that you should know what a closing inventory is. Closing inventory is the leftover unsold stock of a business. For example, एक car dealer है. उस car dealer के पास during the year उसने 6 cars buy की. 6 cars में से उसने 5 cars sell कर दी.
तो जो remaining unsold vehicle है, that vehicle is known as closing inventory. And that unsold vehicle goes on from this accounting year to next accounting year. अगर फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, उसका अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, सो क्या होगा कि उसने इस अकाउंटिंग पीरियड में he bought 6 cars, purchases of 5 cars, but he only sold 5. So the closing unsold stock will be 1 car, so which is the closing inventory of this year. और वो 2025 की क्लोजिंग होने के बाद एक ही दिन में एकदम वक्त बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बदल जाएगी. सो 2026 नेक्स्ट ईयर में वो इमीडिएटली आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री से टर्न होके क्या हो जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ द नेक्स्ट अकाउंट. राइट, ओके. चलें जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद वो लोग जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स. क्यों हमें प्यारे होते हैं, क्यों हम इनका बहुत ख्याल रखते हैं? क्योंकि दीज आर द पीपल हु ओ अस मनी. ये वो लोग होते हैं जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया होता है. These are the people to whom we have sold goods on credit and now they owe us. अगर ये कहीं रोड पे जा रहे हो, इनका कोई फड्डा शड्डा हो जाए, तो आप इनको बचाएंगे. क्यों? क्योंकि they owe you money. They are your assets, right? ये आपको बचाएंगे नहीं बचाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है? Because you are a liability to them. But they would definitely save you. You would definitely save them because they are your assets. Okay, so next is money in the bank, money. Yeah. Okay, now there are two things over here. I would say Kaji, other receivables. We will discuss this later, not right now, but we'll discuss this later. But I'm mentioning this Kaji, ye bhi aapke current assets hote hain. So, am I clear on this? Kaji, non-current assets and current assets, is the classification fine? Any question, anyone? Okay, ji. Non-current assets, current assets. Is there a question? Anyone? Yes, no, maybe. Amjad, Rayan, Ateeb, Aiza, Ashir, Ayan, Zubair, Dania, Nimra, Habib, Ishil, Dania, Saad Ahmed, Azim, Hamda, Faizan. Are you guys, is it clear with everyone? This is like, yeah. I know okay, for you this is like, oh, this is like very basics, but we have to start accounting through this because this is how we should be like learning the essence of the subject, right? So this might be two basic things for you, but this is how we would be starting. Okay, now moving on. अब हमारा एक accounting head हो गया which is assets, और assets के बाद we have to move on to the next accounting year head which is my liabilities. Okay, what are liabilities? Liabilities are my obligations, owings, responsibilities, anything that I owe to pay, right? So obligations of businesses, take care who they are obliged to pay, who they have to pay. Those are my liabilities. Now, within liabilities, I also have like two options. Current liabilities, which is basically something that is payable within next 1 year, are my current liabilities. Okay, an example for this would be trade payables. Trade payables are my credit suppliers, okay, to whom I owe because I have bought goods from them, right? And another current liability would be my bank
overdraft. So, can anyone tell me what a bank overdraft is? This is interesting. I really want to know कि how well do you know about a bank overdraft? ये बता सकते हैं? Bank overdraft. अच्छा मुझे बताएं. Can you, as an individual person, can you apply for a bank overdraft? आप bank overdraft apply कर सकते हैं. आप ले सकते हैं bank overdraft. Is that possible for you as an individual? Can you have a bank overdraft facility from the bank? Right. So basically, what is bank overdraft? Bank overdraft is, for example, you have a bank balance of 20,000, but you have withdrawn 30,000. As an individual, the bank would not permit you this. Bank will be like, भाई जितने पैसे हैं उतने निकालो, you can't withdraw more. But as a business, you can withdraw more. Now this 10,000 is your negative balance. That means you have to pay back the bank. Next time आप बैंक में डिपॉजिट करें खुशी खुशी जाके 20,000, लेकिन बैंक आपका बैलेंस शो करेगा कितना? सिर्फ 10,000, because you have to pay for those 10,000 that you had borrowed earlier. So this is a short-term loan, short-term financing facility given to you by a bank, right? But this facility is only given to businesses, क्योंकि बिजनेस आपका बैंक का पैसा इतना इजी लेके नहीं भाग सकते. एंड बिजनेसेस के पूरे record बैंक के पास होते हैं, तो it is actually banks look at businesses as in like pretty easy on them कि हाँ जी ये कहीं नहीं जाएंगे. Okay, so the next thing is मेरे long term liabilities. So the next is my long term liabilities. Long term liabilities are basically things that are payable after 1 year. ठीक है जी, your obligations payable after 1 year are my long term liabilities. An example for that would be bank loan. Right? Okay. Long-term bank loans being borrowed, that's an example. Now, after assets and liabilities, my third thing would be that I'm discussing right now is capital. What is capital? Capital is basically the value of owner's investment in a business that increases with profit and decreases with drawings. Now, what is drawings? Profit we all know, ये तो हम मतलब सबको पता है profit क्या होता है. Drawings क्या होती है? Drawings are withdrawals from business by owner for personal use. Withdrawals from a business by owner for personal use are actually your drawings. Now, okay. So, right. So withdrawals from the business by owner for personal use, that is your drawings. So अब आप मुझे एक बात बताएं. एक ओनर बिजनेस से क्या क्या विड्रॉ कर सकता है? या तो वो बिजनेस से कैश विड्रॉ करेगा, राइट, और फ्रॉम बैंक विड्रॉ करेगा, या बिजनेस से वो इन्वेंट्री भी विड्रॉ कर सकता है, राइट. The owner can withdraw inventory from the bank. ठीक है, why? Because owner को, for example, if there is a store, a very famous grocery store or a superstore,
So the entire grocery coming to that owner's place would be from his own store. That's number one. Number two, the owner can also withdraw cash from the business for personal use. Now, having said that, अब आप क्या करेंगे कि you have assets, you have liabilities, you have capital. Now, we will be now working on an accounting equation. So what will be my accounting equation? So my accounting equation is assets is equal to liabilities plus capital. So value of my assets will be equal to the combined value of liabilities and capital, right? Okay. Now, this is my accounting equation. और अगर मैं इस accounting equation को इस horizontal position की बजाय मैं इसी accounting equation को convert कर लूं into a vertical equation, which is assets is equal to liabilities plus capital. So this vertical presentation of my accounting equation, now this one is important. Vertical presentation of accounting equation becomes my statement of financial position. So something you guys really get stuck on is the statement of financial position. Statement of financial position कैसे बनाएं? Some of you might use, I'm not sure, but some of you might be using a wrong old term of balance sheet, which is not allowed in exam anymore. So अगर आप में से कोई सोचता है कि statement of financial position कैसे बनाएं, या फिर the older term balance sheet, but you should not be using, I should not be using that as well. So how would you make it? Take it. So just keep it very simple. Statement of financial position is vertical presentation of the accounting equation, right? Okay. Any question over here? यहाँ तक किसी का कोई question? Okay. So Dania, Aika, Aiza, Hashir, Zubia, Habib, Nimra, Ishil, Nabil, Azim, Hamda, Amjad, Atib, Faizan. Any question, guys? So basically, by far, what we have cracked is vertical presentation of an accounting equation, not horizontal. If you present it vertically, that is how you make statement of financial position. And this is what we're going to elaborate on. Okay. Any question, anybody? I'm waiting for your response on live chat. So I will elaborate on this further, but by far, I just wanted to confirm if you have any further questions on this. So जी, let's just elaborate it. हमने इसको crack तो कर लिया, but इसको अब हम इसको elaborate करते हैं. Okay. How would we elaborate it? So I said vertical presentation of accounting equation is the statement of financial position. चले जी, इसको देखते हैं जी. So if I would give a heading of statement of financial position. So as I said, assets is equal to liabilities plus capital. So assets में I have two distinctions of assets. कौन सी? Non-current assets and current assets. I'm going to list them down, add them together. I'll have total assets. That's one side of the equation. Okay, I have a query. Yes, Mr. Saad, बिल्कुल सही कह रहे हैं. There is no difference.
The equation can be written vertically, horizontally, but when it comes to presenting financial statement, when you present a statement of financial position, you write the accounting equation horizontally. You make the accounting equation horizontally because it becomes user friendly. Uh, as the user of financial statement, it doesn't make a difference. You present it horizontally or vertically, but when it comes to like people understanding it at large, okay, you prepare financial statements for the owners, limited companies prepare financial statements for their shareholders or the analyst. So it's a general human psyche that we would like to read in a horizontal format, in a portrait format, not the landscape. So that is why all your notebooks, your books are designed mostly in the portrait mode, not the landscape mode. So there is no difference, Mr. Saad. बिल्कुल difference कोई नहीं. But it's just the way of presenting it, right? Am I clear, Saad? Okay. Liabilities may be, there are two distinctions: current liabilities and long-term liabilities. And within capital, the distinction is, yes, there's an equation actually, which is opening capital plus net profit minus drawings is equal to closing capital. Okay, I'm missing one thing over here. Chalo, let me just write it. Plus additional investment made during the year. मतलब साल के शुरू में जो कैपिटल था उसमें इस साल कितने मजीद पैसे डाले एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ ओनर को, एंड ड्रॉइंग्स, ठीक है, माइनस ड्रॉइंग्स. सो नेट प्रॉफिट से कैपिटल आपका इंक्रीज होता है, बट ड्रॉइंग से आपका ओनर का कैपिटल डिक्रीज होता है. एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट से आपका ओनर का कैपिटल इंक्रीज होता है. राइट? ओके. सो if you have this clarity, please let me know so that we can move forward. Anyone? Any questions? Anyone? Yes, Haika, Amar, Zubair, Dania, Habib, Nimra, Ishil, Mia, Mohammed, Ayan, Dania, Nabil, Saad, Rayan, Hamda, Amjad, Atib, Faizan, Hashir. Any question? Anyone? Oh, very good. Haika, I got your reply. Okay, so this is how you prepare your statement of financial position. So now finally, what we will do is we will make the format, the official format of how statement of financial position is being made. What we'll do is हम नॉन करंट एसेट्स में जितनी भी चीजें होती हैं उनको ब्रेक डाउन कर देंगे, करंट एसेट्स में जितनी भी चीजें होती हैं उनको लिस्ट डाउन कर देंगे. That is how we'll have total assets. And then current liabilities की चीजें, long term liability की चीजें. So जितनी भी चीजें हैं, we list them down, and once all of them are listed, we will prepare statement of financial position easily. ठीक है जी. So let's look at the format of statement of financial position. Okay. In an exam, if you are being asked to make a statement, you will be making it with like 3 columns. Okay, I understand that. Okay, but at the moment, just for the basic understanding of it, I'm making 2 columns. But in an exam, you will be making it with 3 columns. चलें जी, मैं भी 3 column पे ही बना देता हूँ, so that we should be following एक ही पूरा standard pattern. Okay. All right. So, okay. So इसको देखते हैं ऐसे. सबसे पहले I'm going to list down my non-current assets. Right. Non-current assets में land and building,
So these are imaginary values. We are doing a format, so I'm just writing imaginary values. लैंड एंड बिल्डिंग के बाद हमारे पास है मशीनरी. हर बिजनेस के पास अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उसके नॉन करंट एसेट्स होते हैं और उनकी वैल्यूएशन होती है. एग्जाम्पल, एक सोल ट्रेडर, बिकॉज इट्स अ स्मॉल बिजनेस, उसके पास कम वैल्यू का लैंड एंड बिल्डिंग हो, और मे बी हो भी ना, उसके पास हो सकता है उसने रेंटेड हो, तो उसकी अपनी ओनरशिप नहीं हो, उसका अपना कंट्रोल नहीं हो, तो नहीं भी हो सकता. So it is not necessary that every business should have all the non-current assets that I'm listing over here. नहीं, जरूरी नहीं. कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, सब हो सकते हैं. किस वैल्यू के होंगे, तो एवरी बिजनेस इज डिफरेंट. तो हर बिजनेस के हर नॉन करंट एसेट की वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट होगी. सो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट और tools, furniture. So I'm going to list down all the values of non-current assets, and end में मैं इनका total shift कर दूंगा to the next column. That is my, this value will be my total NCA, non-current assets. Non-current assets के बाद the next subheading will be current assets. Okay. Closing inventory, trade receivable. Okay. I'm very sorry about my writing, but it's okay. That is why मैं साथ साथ बोलते भी जा रहा हूँ. Okay, how do you know? Okay, so basically all the assets that can be used for more than a year. Like आप मुझे बताएं कि those assets that are listed down on with the non-current asset, those are the ones that you can use for more than a year, are non-current assets. And assets that keeps on changing or fluctuation or rotation में जो changes होते हैं. Like for example, inventory. एक business है, उसके पास let's suppose एक car dealer. उस कार डीलर के पास स्टार्ट ऑफ द ईयर 3 कार्स, फिर 4 और खरीद ली, 7 होगी, उसमें से 5 सेल हो गए, फिर और खरीद ली, फिर और सेल. ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री इज ऑन अ कांस्टेंट रोटेशन, कमिंग गोइंग, इनकमिंग गोइंग, इनकमिंग गोइंग. रिसीवेबल्स, योर कस्टमर्स, आप जितने लोगों को सेल कर रहे हैं, कस्टमर्स की वैल्यू बढ़ रही है, वो आपको पे कर रहे हैं, आपकी बुक्स में कस्टमर्स की वैल्यू कम हो रही है. सो करंट एसेट्स आर द वन दैट आर ऑन रोटेशन. मनी इन योर बैंक, मनी एज कैश, ये आपकी रोटेशन पे. बट नॉन करंट एसेट्स आर लाइक सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड. They stay, they're stagnant, that is being used over the years. In fact, that are being used for more than a year. ठीक है जी? Okay, understood? High cup. Closing inventory, trade receivable, bank, cash. मैं इनकी वैल्यूज को ऐड करके भी यहाँ ले जाऊंगा नेक्स्ट कॉलम में. So this is my total current asset, and finally by adding them together I will get my total non-current assets. ठीक है जी? ओके, नॉन करंट एसेट्स के बाद करंट एसेट्स की बात करते हैं. ओ, करंट एसेट्स हो गए. वी विल टॉक अबाउट करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज. ओ, you remember accounting equation is assets equals liabilities plus capital. So this is the value of total assets. So current liabilities की अब बारी आती है, जिसमें we have trade payables and bank overdraft. If you have a positive bank balance, तो bank overdraft आपके पास होगा नहीं. So this is your current liability.
now is the long term liabilities. Long term liabilities may you have bank loan comes over here directly because that's the only value. And finally, इसमें आ जाएगा uh, the equity section of a company. Now, it's just the continuation. तो मैं आपको इसमें equity section में you have opening capital plus net profit plus additional investment minus drawings. So opening capital, net profit, additional investments. I'm going to subtract drawings from it. So this will be the value of my closing capital. So अब आप देखो जी accounting equation देखो. So that part was assets. यहाँ पे मैं liabilities को भी total कर सकता हूँ. Total assets के बाद total liabilities आ गई. Plus now I'm listing down my capital part over here. So this is what I'm trying to explain you. कि जी आपकी statement of financial position is your accounting equation, but presented in a vertical format. देखिए जी assets आ गए आपके easily. All the assets, non-current assets and current assets. Let me just mark them. Non-current assets ये आ गए. Current assets ये आ गए. And if you add them together, so this will be your total assets, right? Total assets के बाद you have current liabilities, long-term liabilities listed down, and this will be your total liabilities, right? And finally, the equity. The equity means the capital ownership of the business. So opening capital, start of the year, value of capital, जितना capital था, उसमें इस साल का प्रॉफिट कितना ऐड हुआ, जो भी बिजनेस ने प्रॉफिट बनाया, लॉस होता तो माइनस हो जाता है. इस साल उन्होंने मजीद अपने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट किए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट minus the value for drawings. So this is your closing capital. So liabilities plus capital, ये देखिए जी, liabilities plus capital, and the value is equal to total assets. So this is how you make your statement of financial position. Any question, anyone? हाँ जी. Aika, Azim, Zubia, Dania, Habib, Nimra, Ishil, Ayan, Dania, Nabil, Saad, Rayan, Hamda, Amjad, Aiza, Atif, Faizan, Ashir. Any question? Any question by far? Or is it clear? Okay. So basically, as we will progress, हम आगे जाके देखेंगे कि जी ultimately, okay, very good question. So Haika ने पूछा कि sir, I'm confused about the three lines and the purpose. And for Azim and Mia Mohammad Ayan, it is clear. ठीक है. Okay. हाइका मैं आपको बता दूं. ठीक है. So
लेटर ऑन तो मुझे इसको डिस्कस करना ही था, लेकिन हम उसको अभी थोड़ा सा प्रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट। देखिए जी, हमने बेसिकली करना क्या होता है, एज द सिलेबस इज गोना प्रोग्रेस, आप देखेंगे जी नॉन करंट एसेट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उस कॉन्सेप्ट से आप सब बखूबी वाकिफ होंगे, एंड द कॉन्सेप्ट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, एनीवन who is not aware regarding what depreciation is, क्या होता है depreciation? कोई depreciation में किसी को इशू है, मतलब इशू तो हो सकता है, but is there anyone who doesn't know what depreciation is? I think depreciation सबको पता होगा, but उसमें confusions रहती है। Okay, so basically depreciation क्या होता है? It is the loss in the value of non-current asset। मतलब एक एसेट है, आपने बाय किया, चलो इसकी बेस्ट एग्जांपल, आप एक नहीं करें, और वो सिर्फ और सिर्फ के नाम पे रजिस्टर हो जाए। वंस इट गेट्स रजिस्टर्ड ऑन योर नेम, आपने ना चलाई है ना कोई यूज की है, वहीं खड़ी है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद उसको अगर आप बेचेंगे, सो वुड यू सेल इट एट अ हायर वैल्यू और अ लोअर वैल्यू? लाइक आपने गाड़ी खरीदी 9 मिलियन की, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट थी लाइक 1 मिलियन मोर, 10 मिलियन की गाड़ी खरीदी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अब वो गाड़ी हो गई सेकंड ओनर, फर्स्ट ओनर गाड़ी, यू हैव बिकम एन ऑफिशियल ओनर ऑफ दैट कार। ठीक है, अब मैं अगर गाड़ी खरीदूंगा तो मैं सेकंड ओनर बन जाऊंगा उसका, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी विदाउट इवन यूजिंग दैट कार। हाँ, पाकिस्तान में एक और कंडीशन भी है, एंड दैट कंडीशन इज कि जी आप अगर उस गाड़ी पे ओन नहीं चल रहे हो, एक अलग कॉन्सेप्ट। सो वंस यू हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, यस, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कि एसेट अपनी वैल्यू लूज करते हैं यूज करने से, डैमेज करने से, पुराने हो जाने से, ऑब्सोलीट होने से। फॉर एग्जांपल, हम एक लैपटॉप लेते हैं, अरे लैपटॉप छोड़े, आप आईफोन लेते हैं, एक आईफोन लेते हैं, आज आपने आईफोन लिया, पीटी अप्रूव कराया, सो द टोटल डैमेज टू योर पॉकेट इज 570,000 rupees, 17 Pro Max, PT approved, whatsoever. Sell it after 6 months. Would there be anyone who will pay you 570,000 rupees? No. You might get 400,000, you might get 450,000. That depends on the condition of you. So the loss in the value of an asset, ठीक है, किसी भी वजह से, that's depreciation. अब हम ये करते हैं कि the reason we make 3 column is we designate this first column to cost, कि नॉन करंट एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या थी, कितने का बाय किया था, this column as accumulated depreciation, मतलब उस एसेट की डेप्रिसिएशन टू डेट, जब उसको खरीदा था उससे लेके आज तक इसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना है। सो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, वी गेट दिस वैल्यू व्हिच इज नोन एज एनबीवी और नेट बुक वैल्यू। सो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ 3 कॉलम एसओएफपी है जो आप यूज करते हैं, this concept only applies to non-current assets. That is it. Because in non-current assets, we have cost, we have depreciation, we have net book value. So because we have to show differently, हर asset की historical cost अलग, उसकी आज तक की previous plus current years की depreciation minus and the net book values, आपके हिसाब से आपके asset की आपके book में value is the net book value. So because हमें ये 3 चीजें अलग अलग शो करनी होती हैं, that is why we use 3 column statement of financial position. उसके अलावा इसके बैकग्राउंड स्टोरी और कुछ भी नहीं। ठीक है जी। सो और ये 3 कॉलम्स सिर्फ और सिर्फ आपकी कन्वीनियंस एंड प्रेजेंटेशन के एसेंस को बेहतर करने के लिए, कोई दुनिया में कहीं नहीं लिख के आया कि नहीं जी अगर एसओएफपी 3 कॉलम नहीं होगी तो आपको जो है वो एसओएफपी कंसिडर नहीं होगी, वो ऐसा नहीं है।
लेकिन आपकी एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन भी है, ठीक है। तो एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन के साथ साथ आपका जो है वो ये भी है कि आपकी प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाती है, राइट? सो इज दिस अंडरस्टूड? Yes, Haika, you only make these three columns just for non-current assets. Because आपको non-current assets का कॉस्ट अलग दिखाना होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितने का खरीदा था, आज तक वो कितना डेप्रिशिएट हो गया है, और आपके एसेट्स की आपकी बुक्स में क्या वैल्यू चल रही है, दैट्स द नेट बुक वैल्यू। सो यू मेक थ्री कॉलम्स लाइक वन, टू एंड थ्री कॉलम्स ओनली फॉर योर नॉन करंट एसेट्स की वजह से, दैट इज इट। बाकी उसके अलावा आप पूरी वर्किंग सेकंड कॉलम, टू कॉलम्स भी कर देना, थ्री कॉलम्स भी कर देना, दैट इज योर चॉइस। ठीक है जी, ओके, इज दैट अंडरस्टूड? ओके, like I said, okay. What about you, Rayan, Azim, Zubia, Dania, Habib, Nimra, Ishil, Mohammad Ayan, Nabil, Saad, Hamda, Amjad, Aiza, Atif, Fazan? What about you guys? Okay, okay, you also understood. ठीक है जी. So, Saad is also online. Very nice. ठीक है जी. So, आज आपको पता चला कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना अकाउंटिंग की सबसे इजी चीज होती है, बिकॉज यू जस्ट फॉलो अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ ये कोरिलेशन मैच क्यों नहीं करता। व्हेन यू स्टार्ट ऑफ स्टडिंग अकाउंटिंग, मे बी ग्रेड 9 में, ग्रेड 10 में, जब आप अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करते हैं, सो यू जनरली स्टार्ट विद अकाउंटिंग इक्वेशन। बट in your schools, in your colleges, and you're like wherever you're studying accounting from, they just teach you accounting equation in a horizontal format. Assets is equal to liabilities plus capital. अगर आप उसी हॉरिजॉन्टल को वही कोरिलेट कर लें जी, वर्टिकल हो जाए और एक्सपैंड हो जाए, तो दैट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है जी, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव an idea about non-current assets, so you can easily list down non-current assets. All of you have idea about current assets, you can list them down, their values. Liabilities, current liabilities, long-term liabilities, right? And then the equity section. So you have that idea. But आपने कभी उसको horizontal से vertical picturize नहीं किया होता. So that's the only difference, right? So that is basically the statement of financial position. इसका मतलब ये है कि SOFP में मेरे 5 में से 3 अकाउंटिंग हेड्स यूज हो गए। कौन कौन से 5 अकाउंटिंग हेड्स कौन से थे? लेट अस गो बैक एट द स्टार्ट ऑफ दिस क्लास। हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग में कुछ भी होता, वॉट एवर इज देयर इन अकाउंटिंग, ठीक है, वॉट एवर इज देयर इन अ बिजनेस, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग हम उसको कैटेगराइज करते हैं नंबर 1 एसेट्स में, नंबर 2 लाइबिलिटीज में, नंबर 3 कैपिटल में। इसका मतलब ये है कि एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, इन तीनों चीजों की डेजिग्नेशन तो आ गई किधर? SOFP के अंदर। तो अकाउंटिंग हेड्स में जितनी भी चीजें थी, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ये सब के सब कहाँ आ गया? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बचे क्या? क्या बचे भाई? बचे आपके इनकम, दैट इज नंबर 4, एंड दिस इज नंबर 5। ये दोनों चीजें कहाँ आती हैं? ये चीजें आती हैं आपकी इनकम स्टेटमेंट, or you call it now a very fancy name of income statement has emerged, और fancy name क्या है? Statement of profit and loss। ठीक है जी। Someone who would say trading and profit and loss account, I was like कि भाई 10 साल पुरानी जिंदगी जी रहे हैं आप, ठीक है, that's an old term। Income statement is acceptable, but the new term for this is statement of profit and loss। ठीक है जी।
जैसे SOFP की पुरानी स्टेटमेंट वाज बैलेंस शीट, बट यू कैन यूज दैट एनी मोर, बट आप इनकम स्टेटमेंट अब भी यूज कर सकते हैं एज अ टर्म। तो पूरी अकाउंटिंग आके आप सोचें, पूरी अकाउंटिंग आके एंड में सब मर्ज हो जाती है सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स में। इनकम एंड एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाते हैं, और आपकी अकाउंटिंग बुक सारी क्लोज हो जाती है। ठीक है। और हमने अभी तो फिलहाल देखा कि अकाउंटिंग में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह ड्रॉ, राइट। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन? इफ देर इज नो क्वेश्चन, सो देन वील मूव फर्दर। एनीवन, एनी क्वेश्चन? अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, ये कैसी बातें हो रही हैं? बहुत सारे लोगों को रिवीजन आ रहा होगा ग्रेड 9 का, 2 साल पुराना, 1 साल पुराना है जी। ओके, एनी क्वेश्चन, एनीवन? वेरी नाइस। अच्छा जी, चले जी। मैंने आपसे, आप लोगों ने जब इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होंगी, उन रील्स में मैंने आपसे कहा था कि जी माय फोकस विल आल्सो बी ऑन थ्योरी। तो मैंने आपको अब तक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट तो समझा दिया कि जी ये आपके आ गए एसेट्स, ये रहे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये जी लायबिलिटीज आ गई प्लस कैपिटल आ गया। लेकिन मैं आपको एक बात समझाऊं, ओके, लेकिन अब इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी थोड़े से देखते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, सर आपने अकाउंटिंग तो शुरू करा दी, लेकिन हमें बताया नहीं कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है, राइट। सर यू टोल्ड अस अबाउट नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल, लेकिन ये तो आपने बताया नहीं। आप तो डायरेक्ट शुरू हो गए, ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इसका बहुत ही कॉमन एमसीक्यू आता है। आप जब इंशाल्लाह एमसीक्यूज करने बैठेंगे, यू विल सी कि जी every other paper, ठीक है, has this question about bookkeeping, accounting. Okay, so bookkeeping क्या होता है? Bookkeeping is all about recording financial transactions within the books of accounts. Okay, so that's bookkeeping. ये bookkeeping क्या होता है? चलें जी मैं आपको समझाता हूँ। You must have seen every business they have an accountant, और unfortunately 100 में से 25 accountants का नाम सिद्दीकी साहब था। तो वो जो दादा के जमाने के सिद्दीकी साहब हैं, दैट सिद्दीकी साहब इज रिस्पॉन्सिबल टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में पे हुआ, रिसीव हुआ, क्रेडिट पे सेल हुआ, क्रेडिट पे बाय हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, सिद्दीकी साहब विल रिकॉर्ड इट, राइट। ठीक है जी। आपने क्रेडिट पे मिस्टर कलीम को सेल किया, क्रेडिट पे, no money was exchanged, but Siddiqui Saab was on it. Siddiqui Saab was like, okay, let me record it. आपने मिस्टर जेम्स से कुछ बाय किया, Siddiqui Saab was on it. Any financial transaction happening in the business, your bookkeeping is happening, which is like your accounting manager, accounting clerk, ठीक है, accounts manager, accounts clerk is recording all of that. Accounting is basically preparing financial statements, providing, you know, meaning, I would say meaningful information from
कीपिंग डेटा। आप बोलेंगे सर ये कौन सी आपने डेफिनेशन लिखवा दी, ये तो कहीं मैंने देखी नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। आपने सिर्फ और सिर्फ ये रिकॉर्ड करते गए कि आज आपने रेंट इतना पे किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी इतना पे किया, दैट्स बुक कीपिंग। अकाउंटिंग इज एट द एंड ऑफ द मंथ व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, और आपको एक्सपेंसेस के टोटल मिल जाएंगे विद इन इनकम स्टेटमेंट। सो वो जो डेली बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स का डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, डेटा अपडेट हो रहा है, उसको एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग देना, दैट्स अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है आपका प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपके पास टोटल्स होते हैं, टोटल्स ऑफ एक्सपेंसेस, टोटल ऑफ एसेट्स, टोटल ऑफ लायबिलिटीज। देन यू हैव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कि आपको प्रॉफिट और लॉस कितना है, एंड देन फाइनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, राइट? So this is all accounting, and bookkeeping is maintaining books of accounts. That's all bookkeeping, right? एक तो ये चीज यहाँ पे important थी आज जिसको डिस्कस करना जरूरी था। दूसरा, working capital, and the third thing is, oh, 1A and 1B, I should label it. What is working capital and what is capital employed? हाँ जी, working capital means current assets minus current liabilities, right? Okay. Now, working capital क्या होता है? Working capital is basically your excess current assets, okay, that are used to pay day-to-day expenses of a business. Let's suppose आपके पास current assets हैं 20,000 के and current liability है आपके पास 10,000 की. So your working capital is how much? $10,000. So this is an amount that is used to pay your routine daily expenses, right? So we will be discussing a lot more about working capital in detail later on, but working capital भी again statement of financial position से ही extract होता है. That is why I thought I should tell you about working capital right now. Okay. And one more thing is capital employed. Capital employed is total value of investment in a business. ठीक है जी. So when I say total value of investment in a business, I calculate capital employed by two ways. Either it is like non-current assets plus current assets minus current liabilities, or your equity plus long-term liabilities. Now, how would we understand this? सोचिए जरा. Basically, आप सोचें एक बिजनेस को जब स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए ओनर अपनी इक्विटी इन्वेस्ट करेगा, राइट? या तो वो क्या कर सकता है, बिजनेस के लिए बैंक से लोन भी ले सकता है. सो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब उस बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगा हुआ, टोटल इतने की इक्विटी लगी हुई है प्लस इतने का लोन लगा हुआ है. तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दैट्स कैपिटल एम्प्लॉयड. और दिस इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को ब्रेक करूं, सो इस इक्वेशन को भी ब्रेक करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग दो चीजें बनती हैं. आई कैन से कि जी टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज
or I can say non-current assets plus working capital. कह सकता हूँ ना मैं? देखिए, current assets minus current liability, that's working capital. Non-current assets plus current assets, that's total assets, right? So statement of financial position से ये दो interesting दो चीजें निकलती हैं. But I would want you to have a clarity in this. This is like very simple, basic. No, no differences. No, मतलब बहुत सारी confusions, complications. No, current assets minus current liabilities. That's working capital. Capital employed you can calculate by two means. One is equity plus long-term liability. I would use this for 80% times. लेकिन मुझे साथ साथ ये 20% भी पता होना चाहिए generally. Okay? All right. So, any confusions by far? तो यहाँ मैंने इस 20% में ब्रेक क्या किया था मैं वापस बताया था नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स दैट्स टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल दिस इज हाउ आई कैन कैलकुलेट माय कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ डिटेल में क्योंकि एमसीक्यूज में वो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछता है कैपिटल हाउ डू यू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड वो कभी कभी आपको या तो वैल्यूज दे देगा तो either you can do this or you can do any of these approaches. So MCQs में it gets tested very frequently, right? Okay. Any question, anyone? Any question, anyone? Razan, Ashir, Aiza, Azim, Hamda, Nabil, Dania, Habib, Zubia, Nimra, Haika, Rayan. Any question? Yes. Net worth of a business नहीं बेटे देखें net worth of a business is basically the equity of the business. ठीक है मैं एक बिजनेस की नेटवर्थ अगर निकालूं तो मैं उसके एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज द नेटवर्थ ऑफ अ बिजनेस लेकिन मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूं ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि उस बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है ओनर की तरफ से विच इज द इक्विटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है विच इज द डेट ठीक है तो अगर मैं लेट्स सपोज मैं और मिस्टर साथ आज हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं you had bring in 5 million मैं ले आया तो 10 million तो हमारी इक्विटी हो गई और हमारा बिजनेस भी पार्टनरशिप हो गया तो साथ लाए 5 million मैं लाया 5 million तो हमारी इक्विटी होगी 5 million जैसे ही हमने रेनोवेशन वगैरह शुरू की हमने कहा भाई 4 million और चाहिए अदरवाइज हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर देंगे हमारी प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी आउट हो गई 4 million का हमने बैंक से लोन ले लिया विच इज द डेट So total capital employed in the business कितना हो गया 5 million by सात 5 million by तैमूर 10 million की equity और 4 million का debt which is the loan. So total capital employed in the business कितना हो गया 14 million rupees. Right? लेकिन मेरी और सात की ओनरशिप कितनी है उसमें 10 million बाकी 4 million क्या है उसका debt loan. Is that clear? Any confusion? हाँ जी Zubia, Nimra, Haika, Rayan, Dania, Habib, Ishil, Nabil, Hamda, Amjad. Any question, guys? Very nice. ठीक है जी. So, okay. So what we'll do is let's just keep our class till here. ठीक है. So that हम फिर इसको अभी तक यहाँ तक रखते हैं और क्योंकि नेक्स्ट क्लास में we will be discussing income statement. So we have discussed 3 essential accounting heads आज और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनकम और एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे सो दैट हमारे सारे अकाउंटिंग हेड्स सारे के सारे मर्ज हो जाएं
अच्छा, और हम मजेदार बात, हम जो है बिल्कुल अपनी कॉम की तरह चलेंगे बैकवर्ड्स. Statement of financial position is the last thing you prepare, right? And that's the first thing you have learned. Now we'll go a step back and we learn the income statement on how to calculate profits. Then we'll go a step back again and we learn trial balance. क्योंकि सीधा सीधा अगर मैं और हम इस कॉम में लोगों को समझ में आ जाए, क्या ही बात हो, लेकिन हम तो उल्टा समझते. बट दैट इज मोर कन्वीनियंट एज वेल, इजंट इट? ठीक है, सोचे ना आप कि जी आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इजी टू असेस, इजी टू कॉम्प्रिहेंड. ओ अच्छा, ये एसेट्स होते हैं, ये लायबिलिटीज होती हैं, हो गया. मूविंग बैक, income minus expenses, that's profit, that's easy. Then moving backwards is like trial balance. So after that, we will be like, we'll have a very clear understanding that, oh, अच्छा जी, trial balance, income statement ऐसे पे, because हमने इसको backwards सीखा हो. Doesn't that sound interesting? क्या कभी आप लोगों में से किसी ने इस तरह सोचा कि ऐसे भी हो सकता है? Anyone who gave a thought about it कि यार अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं? Anyone? Doesn't it sound interesting? कि जी लास्ट चीज पहले पढ़ ली, अब इससे पहले क्या होगा. Then there's going to be ambiguity कि इससे पहले क्या होगा, right? Okay, so right, so we'll keep it here. We'll keep it here. Inshallah, I'll see you in the next session. And next session we'll be discussing income statement, and then we'll be solving a question. Just maybe we'll prepare income statement as well as statement of financial position. Right. So take care, everyone. Allah Hafiz. I'll see you in the next class. Bye bye.